Yesterday we talked about the conditions of the solutions of the linear equation into variable. Now we apply these conditions for solving the questions. For example, find the value of k for which pair of linear equations has no solution. The question is 3x plus y is equal to 1, and second is 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1. So for solution, for no solution, condition is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 by c2. It means a1 is 3 upon 2k minus 1 is equal to b1, that is 1 upon k minus 1 is equal to 1 upon 2k plus 1. It is not equal. So from these three terms we make two conditions from first and second term. First and second term, we make an linear equation after multiplying this. 3k minus 3 is equal to 2k minus 1 implies 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3 implies k is equal to 2. Similarly, from second and third, term, 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1, and after cross multiplying it will be 2k plus 1 is not equal to k minus 1 implies k is not equal to minus 2. It means for the linear equation has no solutions, these two equations must satisfy this condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. From here a1 by a2 is 3 upon 2k minus 1, y का कोफिशिएंट बिकॉज 1 है तो 1 upon k minus 1 and not equal to 1 upon 2k plus 1. From first and second term we solve and find the value of k and it is equal to 2. Similarly, k is not equal to 2. The second question of the same conditions, find the value of p and q. The same conditions, the second question will be find the values of p and q so that pair of equations has infinite solutions. For example, the equation are 4x plus 5y is equal to 2, and second equation is 2p plus 7 into x plus p plus 8q into y is equal to 2q minus p plus 1. From these two equations we have to find the value of p and q for infinite solutions. So for infinite solutions, the
the condition is A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 and also it equal to C1 by C2. From here A1 is 4 upon 2p plus 7 is equal to 5 coefficient of I upon p plus 8q is equal to 2 upon 2q minus p plus 1. If we cross multiply these two equations from first and second term, from first and this second term, we make first equation, that is 2p into 5, that is 10p plus 7 into 5 35 is equal to 4p plus 32q. Imply the equation becomes 6p minus 32q is equal to minus 35. This is the first equation from these two. Now from second and third, the equation becomes 5 to the 10q minus 5p plus 5 is equal to 2p plus 16q. From here the again equation becomes 7p. If we transfer this minus 5p in right side, it will become 7p. 10q को right side में shift करेंगे तो it will become 6q, and here you will left with 5 only. This is the equation number 2. Now these two are also the linear equation in two variable, and you have to solve these two equations either by elimination method or by substitution. Suppose we are using elimination method, then this equation is 7p plus 6q is equal to 5. This is equation number 2. For equating the coefficient, we should multiply this equation by 7 and this equation by 6. Then we will get 45p q is equal to 245. Similarly here 45p plus 36q is equal to 30. If we change the sign of the p will be eliminated, and here you will left with minus 260q is equal to minus 275. This will be cancelled. In this way you will get the value of q. We will get this value 52 by 55 by 50. In the same way, if you substitute this q, we will get the value of p in this equation. So in this way we can solve the conditional questions. Either you have to find the value of k or p and q. Now also we are going to solve some words problem. This depends on the equation. For example, the question is, if the sum of digits of a two-digit number is 11 and the number obtained by reversing the digit
exceeds the given number that number by 63 find the number। तो क्योंकि हमें 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है तो इसके लिए 2 डिजिट सपोज कर लेते हैं। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x। सिमिलरली डिजिट एट tens place is equal to y। then the number found by these digits, required number is equal to, नंबर कैसे बनाएंगे, जो x है ये यूनिट प्लेस पर है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 इंटू एक्स, और ये टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू वाई और ऐड कर देंगे तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा जिसकी यूनिट डिजिट वो x है और 10 डिजिट 10 y है। तो रिवर्सिंग नंबर जो बनेगा यहाँ से डिजिट्स को रिवर्स करने पर वो अब ये डिजिट यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ, इसका मतलब ये 1y हो जाएगा और ये प्लस 10x या 10x प्लस y। नाउ इफ यू यूज दिस कंडीशन of the questions, you have the 2 equations. First the sum of the digits, and according to the condition of the question, first the digits का जो sum है यानी x पहली डिजिट है दूसरी y, तो x plus y is equal to 11। this is the first equation। similarly second equation में number obtained by reversing the digit यानी ये नंबर 10x plus y इज एक्सीड्स का मतलब मोर है, कितना ज्यादा है 63 बाय x प्लस 10y, ये रिक्वायर्ड नंबर है उससे 63 ज्यादा है प्लस 63। इसको सोल्व करेंगे तो x यहाँ लेके आएंगे, इट विल बिकम्स 9x। सिमिलरली ये यहाँ लेके आएंगे माइनस 9y एंड इट इज इक्वल टू 63। but this is not a simplified equation, implies if you divide this equation by 9 you will get the simplest equation x minus y is equal to 7। suppose this is the equation number 2। now these 2 equations can be easily solved by elimination as well as substitution method। suppose we are using this elimination method, then x plus y is equal to 11 and here x minus y is equal to 7। the coefficient of y are equal as well as have opposite sign, that's why x plus x becomes 2x is equal to 18, so x is equal to 9। similarly if these 2 equations, या तो आप इसको x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा फर्स्ट में या इन दोनों इक्वेशनों के साइन चेंज कीजिएगा। फर्स्ट मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 11। इफ यू चेंज द साइन ऑफ दीज नाउ दिस टाइम, क्योंकि यहाँ y एलिमिनेट हुआ था तो x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ x एलिमिनेट होगा और आपके पास y की वैल्यू आएगी माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2। तो फाइंड तो हमें करना था नंबर, नंबर मीन्स रिक्वायर्ड नंबर x प्लस 10y। तो हैंस नंबर इज इक्वल टू x मीन्स 9 प्लस 10 इंटू 2 इम्प्लाई इट विल बिकम्स 29। तो इस तरह से वो नंबर, वो 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स का सम 11 है तो इसके डिजिट्स का सम भी देखिए 2 प्लस 9 11, और इसका जो रिवर्सिंग नंबर होगा वो 92 है। चेक करना चाहे तो रिवर्सिंग नंबर इसका होगा 2 9 का 92, ये 29 से 63 मोड है, ये चेक करने के लिए। तो अब
किसी भी मेथड का यूज सोल्व करने के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, सपोज वी वांट टू सॉल्व another question using either elimination or substitution method. The question is, suppose Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked to cashier to provide him rupees 50 and rupees 100 notes only. She got 25 notes in all. Find each type of notes. Find each type of notes. इसमें भी लेट सॉल्यूशन में देखें, हमें दो टाइप के नोट्स हैं. लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 of ₹50 is equal to X. Similarly, let number of notes of ₹100 is equal to Y. Then again the questions condition says she got 25 notes in all. So the total number of notes 50 और 100 के 25 है. So the equation will become X plus Y is equal to 25. First, पहली equation she got 25 notes. It means total number of notes 25. Second, if number of notes of 50 is X, then the total amount of the 50 rupees notes becomes 50X. Plus 100 notes की जो amount है 100Y, and this will be equal to the total amount 2000. Again, if you divide this equation, you will get the simplest equation. कैसे? On dividing by 50, क्योंकि 50 इसमें कॉमन है, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई. एक तो x plus y इक्वल टू 25, और अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें तो x plus y इक्वल टू 25. सेकंड, x plus 2y इक्वल टू 40. चेंज करें साइन, तो यहाँ ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आपके पास बचा -y. सिमिलरली यहाँ -15. इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल, द y becomes 15. It means the number of notes of ₹100 is equal to 15. Now if you put this value in first or second, putting value of y in equation फर्स्ट में अगर आप पुट करें तो x plus y यानी x plus 15 is equal to 25. Then this x will becomes 25 minus 15 यानी 10. So hence ₹50 notes is equal to x यानी 10, and ₹100 notes is 15. You can also write notes. That's all. इस तरह से आप इस एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज वर्ड्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कर सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डू द वर्ड्स प्रॉब्लम, and
of exercise 3.5, in which the conditional question as well as what problems are there. You have to complete that. In tomorrow we will discuss the last topic of this chapter. कितने हो गए?